Good day people, so this is finally the day I'm going to start working on the steering rack issue. We'll take the engine out, do all the required measurements and push the steering rack back. No one has ever done this on this chassis, so I can only guess the drawbacks. Anyhow, it needs to be done, so let's get started. स्टीयरिंग रैक मैं इसलिए नहीं पीछे पुश करना चाह रहा क्योंकि उससे आपकी ये टायर रोड्स की ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। ये इस टाइम गाड़ी फैक्ट्री स्पेक्स पे है, जिसमें बम्प स्टीयर एंड अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स मिनिमाइज़ किए हैं। अगर मैं इसको छेड़ दूंगा उससे एक तो बम्प स्टीयर कॉज करेगी और इवन के स्टीयरिंग की जो सेंसिटिविटी होती है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो मैं इस टाइम वो करना नहीं चाह रहा। मे बी आई हैव टू डू इट, बट पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं कि हम ब्रैकेट मॉडिफाई करने से कितनी स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द स्टीयरिंग रैक. It's not from A80, I mean from my chassis. It may be from some other chassis. I have changed it, so this doesn't look like A80 steering rack. Rubbers are gone, I will replace them in the process. These are the OEM mounting points. जैसा कि मैंने कहा है मैं इनको नहीं मॉडिफाई करना चाहता, सो पहले मैं ब्रैकेट एंड रबर मॉडिफाई करके देखूंगा कि अगर मेरे पास स्पेस बनती है तो ठीक है, वरना फिर इनको हम मॉडिफाई करेंगे। तो लेट्स सी।
I have trimmed this part a little further as the rubber was not going in all the way. Then these are the circumstances you face while doing such type of modifications. This part now start hitting the firewall, so I have to use a hole saw to make a hole in it. First I will fabricate this part, then use it as a reference point and fabricate this area. अब मैं इस शेप में 14 गेज की शीट में से पीस कट करूँगा, मेटल सरफेस साफ करूँगा एंड देन विल स्टार्ट वेल्डिंग. बट आप ये देख सकते हैं रबर स्ट्रेट नहीं है, सो आई हैव टू मेक अनदर पीस टू होल्ड इट इन प्लेस. Cut it the pieces. So these are bigger for purpose, so I can weld them up. And this is the last one. Goes like that. Now let's clean it up and start welding.
सिट्स परफेक्टली। अब इसके बैक पे कोई और प्लेट वेल्ड करती हैं ताकि वो इसको ग्रिप कर सके। सो कल मैंने ये साइड कंप्लीट कर ली थी। ये मैंने रफली पेंट कर दिया था इसको, जो कि अभी काफ़ी बड़ा भी लग रहा है बहल। रबर इसमें परफेक्टली बैठ रहा है। सो अब मैं इस ब्रैकेट को मॉडिफाई करूँगा इसके ऊपर जो लगता है। बेसिकली इसको थोड़ा छोटा करना है ताकि इसको टाइट कर सकें। उसके बाद देखेंगे कि हमने जो इसकी दूसरी साइड है वो किस तरह मॉडिफाई करनी है। तो मैंने ब्रैकेट कट कर लिया है। अब मैं इसका साइज़ दूंगा कि मैंने और कितना फर्दर इस चीज़ को कट करना है छोटा करने के लिए। तो मैंने ब्रैकेट वेल्ड भी कर दिया है एंड यहाँ से ग्राइंड भी कर दिया है। और ये कट मैंने पर्पसली लगाए हैं बिकॉज आप ये देख सकती हैं फ्लैट नहीं है, जिसकी वजह से मैंने ये कट लगाया। जब मैं इसको टाइट करूँगा इस सरफेस के हिसाब से ये जो गैप है ये इंक्रीज़ करेगा क्योंकि ये फ्लैट होगा। तो जब ये उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा इस शेप के हिसाब से, तब मैं इसको वेल्ड कर दूँगा दोबारा। अब इसे टाइट करके देखते हैं। मैंने ब्रैकेट वेल्ड कर दिया और मैंने ब्रैकेट टाइट भी कर दिया। आप देख सकती हैं इस ब्रैकेट की वजह से जो रबर है वो पीछे उसकी बेस स्ट्रेट है, उसने रैक को खुद ब खुद ही सीधा कर दिया। अब उसके हिसाब से मैं दूसरी साइड पे फैब्रिकेशन कर सकता हूँ। अब इस साइड की बारी है। ये एक्चुअली इजी लगती है बट इट्स रेदर अ ट्रिकी वन बिकॉज देयर इज़ मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग इट। इस साइड के लिए मैंने ये पीस बनाया। बेसिकली मैं ये इसमें रख के अंदर पुश करके वेल्ड कर दूंगा जिसके ऊपर रबर बैठेगा। जैसे कि ये रबर ऐसे इस पर बैठ जाएगा। इधर से ये भी थोड़ी सी कटिंग होगी इसकी, जो कि मैं बाद में काट लूँगा। Like this, I have pressed it in. Now I'm going to weld it. So I have welded it back in. Now I'm going to let it cool down. Then we'll install the rubber and put the straightening rack back and let's see how it goes. मैंने सब कुछ पैक कर दिया है and everything fits nicely. टोटल straightening rack बैक गया है वो about 9 mm है। बाकी अब देख लेते हैं टो में कितना डिफरेंस आया। ये ओएम ब्रैकेट नहीं है, ये डिफरेंट ब्रैकेट है। स्ट्रेन रैक बिल्कुल स्ट्रेट है विद रिस्पेक्ट टू चेसी। विल पेट एवरीथिंग अप एंड नेक्स्ट अप इज ब्रेक लाइन्स, ब्रेक मास्टर सिलेंडर, clutch lines, clutch master cylinder and valve seals. See you next time.